everyone, this is Kavan Thakkar, an esthetician and international cosmetologist from Kavan Skin Aesthetic Ahmedabad. आज के वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि मीज़ो कॉकटेल्स को कैसे यूज़ करना है व्हेन इट कम्स टू द फेस. सो यहाँ पे मेरे पास है बी एटीट्यूड के मीज़ो किट्स. अगर हम देखने जाए तो वी हैव डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मीज़ोज. द फर्स्ट आई हैव इज द कोलाजन पेप्टाइड मीज़ो किट फ्रॉम बी एटीट्यूड. Then we have is the aging and brightening Mizo. Then we have is the scars and stretch marks Mizo. With that we also have one more which is the whitening and brightening Mizo kit. So यहाँ पे मेरे पास 4 अलग अलग टाइप्स की Mizo kits हैं. With that मीज़ो के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट रहेगा इज द डॉक्टर पेन. यू विल ऑल्सो नीड अ नीडल एज वेल. नाउ वी ऑल्सो हैव दिस माइल्ड क्लेंजिंग मिल्क फ्रॉम बी एटीट्यूड फॉर द क्लेंजिंग. वी हैव द एक्सफोलिएटिंग जेल फॉर द एक्सफोलिएशन एंड देन वी हैव द हाइड्रा फोम फॉर द न्यूट्रलाइजेशन. नाउ अगर मीज़ो किट की बात करें तो वी हैव दिस अमेजिंग किट विथ ऑल दिस वायल्स. बट विथ द मीज़ो you can also give the post care to the clients by giving the Mizo kit serums as well, which you can see behind me. So यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो first we will start with the cleansing. So this is a mild cleanser. Again we will pump out the product. So हमारा जो बी एटीट्यूड का क्लेंजर है, this is a milk based cleanser. Now we would spray some water on the face. So यहाँ पे this is a milk based cleanser. So of course आप देख सकते हो कि इसकी consistency जो है it is a bit thick. एकदम इसकी thin consistency नहीं है. It has a lotion based thick. ओके सो यहाँ पे मैं क्लेंजर को जेंटली मसाज कर रही हूँ फॉर 1 to 2 मिनट्स. ये एक लोशन नहीं ना ही है जेल, बट दिस इज अ मिल्क बेस्ड क्लेंजर. सो उसकी कंसिस्टेंसी कंपैरेटिवली लोशन और जेल बेस से काफ़ी थिक होती है. सो दैट इज आई ऑलवेज मेक श्योर कि आप फेस पे वाटर स्प्रे करें एंड देन यू जेंटली मसाज इट ऑन द फेस. ज़्यादा आपको मसाज नहीं करना है विथ प्रेशर. यू हैव टू जेंटली मसाज इट फॉर लाइक 1 to 2 मिनट्स and that is enough for the cleansing. So यहाँ पे हमारा cleansing हो चुका है and now we will wipe off the cleanser. अगर हम बात करें कि ये जो हमें इतने वेराइटीज ऑफ मीज़ो किट्स दिए गए हैं, सो बी एटीट्यूड हैज ऑल दिस वाइड रेंज ऑफ मीज़ो किट्स विच गोज ऑन ऑल स्किन टाइप्स. So here I'll let you know what Mizo kit to use on which skin type. So you can see the cleanser is now almost removed from the face. After the cleanser, the next thing we have is the exfoliating gel. सो यहाँ पे हमारा क्लेंजर वाइप ऑफ हो चुका है. नेक्स्ट स्टेप इज द एक्सफोलिएटिंग जेल. एक्सफोलिएटिंग जो जेल है हमारा इट इज़ अ जेल बेस्ड स्क्रब जिसमें ग्रैन्यूल्स भी है एंड उसकी कंसिस्टेंसी इफ यू कैन सी इट इज़ अ वेरी smooth gel textured. Now it also has granules as well जो जनरल स्क्रब में होते हैं. So the way we do the scrub, we will do it for 2 to 3 minutes and we will gently rub it on the surface of the skin. Over scrubbing नहीं करना है because then we are going to use the Mizo products as well. So now our scrub which is the exfoliation हम इसको करेंगे for around 2 to 3 minutes तक. If you want you can also keep it for like apply and then leave it, but it is better कि आप उसको skin में you massage it gently for like 2 to 3 minutes. Now अगर हम बात करें Mizo kits की, so जैसे मैंने बताया they have 4 Mizo kits.
द फर्स्ट दे हैव इज द कोलाजन एंड पेप्टाइड. सो कोलाजन एंड पेप्टाइड किट्स जो है ये आप बेसिकली यूज़ करेंगे फॉर समवन हु हैज़ एक्ने स्कार्स. एक्ने की वजह से जो बम्पी स्किन टेक्सचर हो जाता है, द स्कार्स रह जाते हैं. फॉर दैट ऑल्सो यू कैन यूज़ कोलाजन पेप्टाइड्स एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ इट फॉर फाइन लाइन्स एंड व्रिंकल्स. सो यू कैन ऑल्सो यूज़ इट फॉर समवन जिनकी स्किन एजिंग हो रही है. For that you can use the collagen and peptide meso kit. The second we have is the aging and brightening meso kit. The aging and brightening, as the name says itself, it has glutathione which is helping with the brightening and aging. So अगर आपके पास कुछ clients है who are about 30 जिनकी स्किन में आपको फाइन लाइन्स, wrinkles and aging process दिख रहा है, plus they have lost glow in their skin, they have dullness, they have lost shine, so for that you can use the aging and brightening meso kit. स्क्रब है, एक्सफोलिएटिंग जेल है, दैट इज वाइप्ड ऑफ एंड ये जेल के बाद ही स्किन का टेक्सचर काफ़ी स्मूथ हुआ है विथ जस्ट वन एक्सफोलिएटिंग जेल. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट व्हाट you can do is you can also do the whiteheads and blackheads removal after this. So the third one we have meso is for the scars and stretch marks. So you can use it on body as well. You can use it wherever you have stretch marks, wherever you have the post-accidental scars, you can also use it on that. And then we have is the whitening and brightening ampules of the meso kit. So whitening and brightening जो है ये basically आपका use होता है for someone who has pigmentation, hyperpigmentation. You can use the whitening and brightening because it has glutathione. Next thing we have is the Hydra foam. So this Hydra foam is basically for the balancing. It is like for neutralizing the skin. So अगर आप चाहे तो आप इसके बाद Hydra foam use करके you can just neutralize the skin. So we will gently apply it. Okay, what you can do is you can also spray some water, and now you can just gently massage it for 1 minute and then remove it off. So ये जो है this is basically a neutralizer. So this is helping with the neutralization of the excessive product. So this also balances your pH level of your skin. We do not have to let the product absorb onto the skin, so we will remove it off. Let's start with the meso kit. So we will need a doctor pen. You can use any other micro needling device, and then we have is this needle. Now we will start with the micro needling. आप कोई भी micro needling device से कर सकते हैं. You can use it with the doctor pen, you can use it with the derma roller. So now the next we have is the whitening and brightening ampule, and we will take around 1 ml of the product. So now we have already took the product, and now the next thing we would do is we will start with the micro needling with the meso kit. So यहाँ पे मैं चीक से स्टार्ट कर रही हूँ. यू हैव टू यूज़ द मीज़ो प्रोडक्ट वेर एवर यू फील इज़ द रिक्वायरमेंट. अगर मान लो आप पिगमेंटेशन पे काम कर रहे हो एंड यू फील दिस इज़ द एरिया वेयर शी हैज़ पिगमेंटेशन, तो यू हैव टू यूज़ इट ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया. सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इसको यूज़ करना. मीज़ो किट्स जो है, आप जब मीज़ो एम्प्यूल्स यूज़ करते हैं तो यू हैव टू यूज़ इट फॉर अराउंड 5 to 10 minutes अकॉर्डिंग टू द स्किन वेरिएबिलिटी. नीडल्स भी आपको ध्यान रखना है कि आप ओवर डेप्थ में यूज़ ना करें. अकॉर्डिंग टू द need of your skin, according to the requirement, whether you have acne, whether you have pigmentation, तो आप उसके according ही use करें needle. So for that you need to have knowledge of what needle to use
फॉर व्हाट टाइप ऑफ द स्किन. ओके, सो यहाँ पे मैंने लिया है वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग फॉर माई क्लाइंट बिकॉज शी इज़ फेसिंग पिगमेंटेशन. अब जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो. अगर आप कोलाजन एंड पेप्टाइड्स यूज़ कर रहे हैं तो कोलाजन पेप्टाइड्स आप फाइन लाइंस एंड रिंकल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. इफ़ जैसे मैंने बोला, इफ़ यू हैव एक्ने स्कार्स तो यू कैन ऑल्सो यूज़ इट देयर एज वेल ऑन द एक्ने स्कार्स. सो जो भी रिक्वायरमेंट है, वॉट एवर रिक्वायरमेंट इट इज़, यू हैव टू सिलेक्ट द मीजो किट फॉर दैट रिक्वायरमेंट. एंड जहाँ पे भी प्रॉब्लम एरिया है यू कैन यूज़ इट. सो ओवरऑल यहाँ पे भी मेरे क्लाइंट को पिगमेंटेशन है एंड वी विल यूज़ द मीजो प्रोडक्ट. यू कैन सी कंसिस्टेंसी जो है मीजो की वो उतनी ज़्यादा थिक नहीं है. सो इट इज़ वेरी ईजी फॉर द स्किन टू पेनिट्रेट द प्रोडक्ट. यहाँ पे वी वुड डू द सर्कलिंग मसाज. आप पूरा मीजो थेरापी जो है यू कैन डू इट फॉर लाइक 5 to 10 minutes विद द हेल्प ऑफ मीजो किट्स. सो एज यू कैन सी मैंने ओवरऑल फुल फेस कवर किया है. we did the 2 cheeks, we did the forehead, and now we are proceeding towards the nose. Make sure bony areas पे over pressure नहीं देना है because the needles can hurt the skin. As I told you, will need to have a proper knowledge for that. And if you want to learn all these courses on what products to use, what techniques, and what machines to use for which skin, you can contact Kavan Skin Aesthetic Ahmedabad, and we have a training academy where we teach all the aesthetic courses, aesthetic machines and products as well. So यहाँ पे मेरे nose पे हो चुका है and then I am proceeding towards the chin. So जैसे मैंने दिखाया, you have to use it all over the face according to the requirement. Now if you feel that there are no acne on the forehead, and then you do not need to use the product there, right? Whatever area problem you have to use the particular meso kit on that particular area. सो मी यूज़ द पोस्ट केयर एज वेल जो आपके ट्रीटमेंट को बूस्ट अप करता है. सो बी एटीट्यूड हैज़ दिस मीजो सीरम रेंज एज वेल विच यू कैन सी बिहाइंड मी. दिस आर द मीजो सीरम रेंज which you can, so after the micro needling you can also give the meso home care, which is the post care. So be attitude also have this meso serums, which are the serums. So if you are going using the collagen peptide kits, you can give the collagen peptide serums. So it is just a boost up for the treatment when they use it at their home. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि micro needling मैंने कैसे किया है. You have to do it for around like 5 to 10 minutes according to the requirement, जैसे मैंने बताया. Now the meso kits. Now again I will give you a quick brief on which meso to use on which skin. So first I have is the collagen and peptides. Collagen and peptides needs to be used for the acne scars. You can use it for fine lines, wrinkles, for skin aging. Then we have is the aging and brightening meso. This can be used for mature skin, for someone who has fine lines, fine wrinkles, superficial lines, as well as someone who has dull skin, who have lost shine, luster. For that, then we have is the scars and stretch marks meso. Scars and stretch marks mesos can be used for the body scars. You can also use it for stretch marks as well on the body. Then we have is the meso kit, which is for whitening and brightening. Whitening and brightening जो है, you can use it for someone which has pigmentation on their skin. So whitening and brightening की अगर हम बात करें तो it has glutathione, which is helping with the lightening of the skin. For the scars and everything, this is the one which you can use it. We have the aging and brightening and the collagen peptides, and as I mentioned that we also have the serums. So we have all this aging, brightening, we have whitening and brightening, collagen, as well as scar stretch marks. So you can also give this serums so that it boosts your meso treatment as well, what you have done. So this is how you use the meso products, and this is Kavan Thakkar, your esthetician and international cosmetologist from Kavan Skin Aesthetic Ahmedabad, and these are the products from Be Attitude Ahmedabad. Thank you so much for watching this video.